Today's question has also been asked in last year's PRMO, and this one is also very useful for any aptitude based exam. So let's get to the question. A group of women working together at the same rate can build a wall in 45 hours. When the work started, all the women did not start working together. They joined the work over a period of time, one by one at equal intervals. Once at work, each one stayed till the work was complete. If the first woman worked 5 times as many hours as the last woman, for how many hours did the first woman work? A question that requires a lot of logic as well as a lot of concepts. So pause the video, try it on your own, and I will see you with the solution on the other side. We can solve this question in many ways. I'll give you a formal method, but if you stay till the very end, I will give you an amazing method by which you can get the answer in 30 seconds or probably even less, right? So let's see the method first. So यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि total work जो है, ठीक है, total work. अब we don't know how many women are working, so let's assume that there are n women, right? So I am assuming that there are n women in total. Now they take 45 hours, ठीक है, and they are working at the same rate, ठीक है, तो आपको efficiency के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. So total work will become number of women into the number of hours that they are working for. So that will become 45n. So total work will be 45n, ठीक है. अच्छा, अब क्या होता है कि 45 hours तो तब लगते हैं जब सब औरतें एक साथ काम करती, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है. हुआ क्या? So one woman started working and after some interval another woman started working and after that very same interval another woman started working. And obviously जो पहली औरत थी वो काम करती रहेगी till the time the work is over, and similarly the second woman will continue working till the time the entire work is over, and so on, right? So let's say the first woman worked for, let's say, t hours, ठीक है. Let's assume that she worked for t hours. So that means the second woman will work for t minus d hours, where I am assuming that the interval is d, ठीक है. And the next woman will work for t minus 2d hours, and so on till the last woman will end up working for t minus n minus 1 into d hours. I am very sure that all of you know that this is nothing but an arithmetic progression only, ठीक है. अच्छा, अब क्या बोला है हमको? That the first woman works 5 times, right, compared to the last woman. So that means ये जो hours हैं वो भी 5 गुना होंगे ना, तभी तो काम 5 गुना होगा. So क्योंकि efficiency same है ना, इसलिए so we can say that t is equal to 5 times of t minus n minus 1 into d, ठीक है. इसको सॉल्व करोगे अगर आप, so ये 5t और ये t कैंसिल होके 4t हो जाएगा, एंड ये इस तरफ आ जाएगा 5 into n minus 1 d. So that means 4t is equal to 5 times of n minus 1 into d. अब पहली औरत ने जो काम किया प्लस दूसरी औरत ने प्लस तीसरी ने प्लस चौथी ने एंड सो ऑन, ठीक है. दैट सम हैज टू बी द टोटल वर्क, राइट. सो इनका जो काम आएगा, n women है, so there are n terms, so that will be nothing but n by 2 into bracket first term plus last term by 2. So first term plus last term, that will become 2t minus n minus 1 into d divided by 2. तो खैर एक्चुअली मैंने बाहर ले लिया तो उसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है. So I can get rid of this. This has to be equal to 45 into n. This has to be the total amount of work done, ठीक है. This is sum of all the work done by all these women. So यहाँ से n will cancel out. Now in place of n minus 1 into d, you can replace that with 4t by 5. In place of n minus 1 into d, right, n minus 1 into d यहाँ पे हो जाएगा 4t divided by 5. अब सॉल्व कर लो इसको, ठीक है. दिस आई एम लिविंग इट टू यू, राइट. सो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दोगे, सो दिस विल बिकम 1 by 2 into bracket 2t minus n minus 1 into d will be 4 by 5 of t, and this should be equal to nothing but 45. इसको सॉल्व करोगे आप, सो यू विल गेट t as 75, ठीक है. आपका आंसर आ जाएगा 75. सो टोटल वर्क डन by the first woman will be 75. Now this is, as I said, the formal method. There is another way to solve this question. In fact, there are many ways to solve this question. I will probably give you the shortest method. Now the question says that
the women work at the same rate and they can build a wall in 40 hours if they all start working together. So that means the first woman will work for 45 hours, the second woman will work for 45 hours, the third one for 45 and so on till the very last woman will work for 45 hours. Now if I pick any two women, right, यहाँ से कोई भी दो अगर आप औरत पिक करोगे, so they will together work for 90 hours and let's assume कि एक आवर में एक यूनिट काम होता है. So that means if you pick any two women, right, any two women, if you pick any two women, total work done will be 90 units. Total work done will be 90 units. ठीक है. अच्छा, अब दूसरे केस में क्या हो रहा है? अब सेकेंड केस में वी आर सेइंग कि इफ द फर्स्ट वुमन लेट्स से वर्क फॉर लेट्स से A units, then the second one will work for A minus D units, ठीक है, and the next one will work for A minus 2D units and so on till the last one will work for A minus N minus 1 into D units, ठीक है. अच्छा, फिर से देखो, ये तो बनेगा तो AP ही. अब AP का प्रॉपर्टी होता है, आपको ध्यान हो तो, कि sum of first and the last term is same as the sum of second and second last term and third last term and fourth last term and so on. तो अगर आप ये पेयर की बात करो, राइट, ये सारे पेयर सेम काम करेंगे, x x x x x. तो यहाँ पे आप दो का पेयर बनाओगे तो एवरी पेयर विल वर्क फॉर सेम नंबर ऑफ यूनिट्स एंड लेट्स अज्यूम दैट इज x. अब नाउ दैट x हैज टू बी 90 बिकॉज यहाँ पे भी, राइट, फर्स्ट केस में, दोनों केस में टोटल वर्क डन इज सेम ओनली, राइट. पर फर्क क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट वुमन इज वर्किंग फॉर 45 यूनिट, सेकंड फॉर 45, थर्ड फॉर 45 एंड द लास्ट वन फॉर 45. इस वाले में दैट इज गोइंग टू चेंज बट द पेयरिंग विल रिमेन द सेम बिकॉज दिस इज एन एपी. द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विल बी सेम एज सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म, दैट विल बी सेम एज थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म एंड सो ऑन. So यहाँ भी अगर आप if you talk about pairs, right, every pair will work for the same number of units and that has to be 90, ठीक है, because first case में any pair will give you 90 only. तो यहाँ भी जो आपका वो पेयर का जो सम है, right, it cannot be 75. आप सोचो लॉजिकली कि यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि भाई 75 पेयर आ रहे हैं, राइट, 75 पेयर नहीं, 75 सम आ रहा है आपका फर्स्ट एंड लास्ट का, तो सेकंड एंड सेकंड लास्ट का भी 75 ही आएगा. अब आपके लेट्स से यहाँ पे n पेयर्स बने तो ऊपर भी n पेयर्स ही बनेंगे. नंबर ऑफ वुमेन आर द सेम ओनली, राइट, n/2 हो जाएगा. इनफैक्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट n वुमेन, पेयर्स विल बी n/2. तो यहाँ पे n/2 into 90 बोल रहे हो आप, बिकॉज एनी टू वुमेन टोटल वर्क डन विल बी 90. तो सेकंड केस में भी 90 होना चाहिए. अच्छा, अब ये जो है, राइट, दैट इज 5 टाइम्स, राइट. तो फर्स्ट औरत ने जो काम किया दैट इज 5 टाइम्स और सम 90 होना चाहिए. तो A plus B, सिंपल सी बात है, A plus B का सम इज 90 and A is 5 times of B. So that means A is 75 and B is 15. ठीक है, ये क्लियर है. So the first woman will work for 75 units, in short 75 days, right? So this is again a very simple approach. If you are clear with the concepts of arithmetic progression, you can solve this within seconds. ठीक है. So ये था आज का एरिस्टोटल ओलंपियाड का क्वेश्चन and I'll see you again with another amazing question.